हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग कंपैरिजन टेस्ट के बारे में डिस्कस किए थे। तो कंपैरिजन टेस्ट का फर्स्ट टाइप जो था, फर्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज लेट यू एन समेशन ऑफ यू एन एंड समेशन ऑफ वी एन बी टू सीरीज of positive terms and let the terms of summation of un be such that 0 less than un less than k vn for all values of n greater than m. Then if summation of vn is convergent then summation of un is also convergent. इसका मतलब क्या है कि un और vn दो, summation of un and summation of vn दो पॉजिटिव सीरीज है, और टर्म का सीरीज है, पॉजिटिव टर्म का सीरीज है। एंड un जो है, un समेशन ऑफ यू एन का जो यू एनथ टर्म यू एन और वी एन सीरीज का जो एनथ टर्म वी एन में ये रिलेशन 0 लेस देन यू एन लेस देन के बी एनी पॉजिटिव एनी नंबर पॉजिटिव नंबर, ये रिलेशन एग्जिस्ट सेटिस्फाई होगा। एंड इफ समेशन ऑफ वी एन कॉन्वर्जेंट, सपोज वी एन कॉन्वर्जेंट, देन वी कैन से यू एन इज ऑल्सो कॉन्वर्जेंट। बट थियोरिटिकली ये जैसे जितने आसान है, जब हम लोग मैथ बनाएंगे, मैथ बनाने के लिए इसका एक मॉडिफाइड वर्सन है, दैट इज इफ समेशन ऑफ यू एन कॉमा समेशन ऑफ वी एन आर टू सीरीज आर टू सीरीज are two series of positive terms such that limit n tends to infinity un by vn equal to L, a finite number, then the two series are either divergent, convergent or divergent. The convergent, either convergent or divergent, are both convergent or both divergent. मतलब क्या है, यू एन और वी एन, समेशन ऑफ यू एन और समेशन ऑफ वी एन दो पॉजिटिव टर्म का सीरीज है। इनिट टर्म का जो रेशियो है, सपोज इसका लिमिटिंग वैल्यू एल है, देन बोथ एक्ट्स टुगेदर, मैंने एक्ट से बिहेव्स लाइक सेम, मतलब दोनों, सपोज वी एन कन्वर्जेंट देन यू एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, सपोज वी एन इज डाइवर्जेंट देन वी एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। ऑलरेडी हम लोग पी टेस्ट का जो पी टेस्ट फॉर्म जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी हाँ, पी टेस्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो कॉचीज जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्वर्जेंस, अभी थोड़ा इसका स्टेटमेंट देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। कॉचीज जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्वर्जेंस, कॉचीज जनरल condition of convergence, right? क्या स्टेटमेंट है, फॉर द सीक्वेंस Sn summation un, for the sequence Sn equal to summation of un
if mod of s of n plus p minus Sn less than epsilon comma n greater than equal to n and p equal to p may be 1 2 3 on so on, ठीक है, देन वी कैन से इट इज कॉन्वर्जेंट। मतलब एस एन प्लस पी माइनस एस एन, सपोज ये कौन, अच्छा एस एन प्लस पी मतलब एस एन प्लस पी, एस एन प्लस पी दैट मीन्स यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस डॉट 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 अप टू यू एन, देन यू एन प्लस वन यू एन प्लस टू एंड अप टू यू एन प्लस पी। और एस एन का वैल्यू क्या है, एस एन मतलब यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस डॉट 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 अप टू यू एन, देन एस एन प्लस पी, देन एस एन प्लस पी, दोनों का माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, एस एन प्लस पी माइनस एस एन, राइट, दैट इज ये यू वन से यू एन तक जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ यू एन प्लस वन प्लस यू एन प्लस टू प्लस डॉट 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 प्लस यू एन प्लस पी, that should be less than epsilon for any value of n greater than equal to capital N and p may be 1 2 3 whatever may be, right। नेक्स्ट हम लोग कॉचीज रूट टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। पहले टेस्ट, जितना भी टेस्ट है पॉसिबल टेस्ट सिंपल, वो टेस्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद कुछ एग्जांपल के ऊपर फोकस करेंगे। नेक्स्ट कॉचीज रूट टेस्ट, कॉचीज रूट टेस्ट, थ्योरम, let un be always positive let un be always positive and limit n tends to infinity, nth root of un equal to L, then number 1 if L less than 1, then if L less than 1 comma summation of un is convergent, summation of un is convergent, number 2 condition if L greater than 1 then summation of un is divergent, number 3 if L equal to 1 the test fail, and the series may be convergent or divergent। तो कॉचीज रूट टेस्ट क्या है, एक समेशन ऑफ यूएन का सीरीज है वेयर यूएन जो है इन ए टर्म ईच एंड एवरी टर्म आर ऑलवेज पॉजिटिव, सब जितना भी सीरीज का टर्म है, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 एन, और 1 प्लस हाफ प्लस 1/3, ऐसे कोई भी सीरीज, मतलब जो जिसमें हर एक टर्म जो है पॉजिटिव है, एंड इनेथ रूट ऑफ यूएन का लिमिटिंग वैल्यू दैट इज एल। अभी ये जो लिमिटिंग वैल्यू है इट में भी हाफ 1/2 3/2 -5/2 कोई भी वैल्यू हो सकता है। सपोज ये लिमिटिंग वैल्यू लेस देन 1 है देन सीरीज इज कन्वर्जेंट।
सपोज लिमिटिंग वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, देन सीरीज इज डाइवर्जेंट, और इफ एल इक्वल टू 1 देन टेस्ट फेल। टेस्ट फेल मतलब इट मे बी कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, मतलब कॉचीज रूट टेस्ट में ये हम ये कंक्लूजन नहीं ले सकते कि वेदर इट इज कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, अदर टेस्ट शुड बी रिक्वायर्ड, दूसरा कोई भी। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रूफ नंबर 1, पहले हम लोग एल लेस देन 1 के लिए देखेंगे। लेट एल लेस देन 1, राइट। सिंस एल लेस देन 1 we can choose an epsilon greater than 0 such that L plus epsilon less than 1. Let L plus epsilon less than 1. Let L plus epsilon equal to R, सपोज उसका वैल्यू R है, so that 0 less than R less than 1, R का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। Since limit n tends to infinity nth root of un equal to L, therefore there exists a positive integer m, therefore there exists a positive integer sorry, there exists a positive integer m such that क्या है कि mod of nth root of un minus L that should be less than epsilon for all values of n greater than m, क्योंकि हम लोग डेफिनेशन देखे थे कि वेदर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un इक्वल टू l देन देयर डिफरेंस का मॉड जो है लेस देन एप्सिलॉन फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये मॉड हम लोग हटा देंगे, तो वी कैन से दिस इम्प्लाइज l माइनस एप्सिलॉन लेस देन nth रूट ऑफ un less than L plus epsilon, right? This implies L minus epsilon whole to the power n less than un less than L plus epsilon whole to the power n, right? Taking the last inequality, जो लास्ट इनइक्वालिटी था, taking the last inequality that is un less than L plus epsilon that is R, तो L plus epsilon की जगह पे हम लोग R से रिप्लेस कर रहे हैं, R to the power n, where यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी चूज कर चुके R इक्वल टू L plus epsilon फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू m, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। सिंस R लेस देन 1, R का वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच में है, सिंस R लेस देन 1, hence R to the power m plus R to the power m plus 1 and so on
is a series of GP, is a series of GP, geometric progression का एक सीरीज है, and it is convergent, and it is convergent. क्योंकि हम लोग पहले ही देख चुके कि आर जब लेस देन वन है तो उसका जो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो सीरीज है दैट इज कन्वर्जेंट, ऑलरेडी हम लोग प्रूव कर चुके हैं. और आर जब ग्रेटर देन वन है और इक्वल टू वन है देन इट इज नॉट ए कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट हो जाता है. तो उस हिसाब से ये कन्वर्जेंट है. तो दैट देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट, तो सिंस आर एन, ये आर एन आर टू दी पावर एन, ये जो ये समेशन ऑफ आर टू दी पावर एन जो है, समेशन ऑफ आर टू दी पावर एन दैट इज कन्वर्जेंट. तो कंपैरिजन टेस्ट के हिसाब से क्या होता है, ये यू एन भी, ये सपोज ये वी एन है, हाँ, तो कंपैरिजन टेस्ट में यू एन लेस देन वी एन, देन वी एन कन्वर्जेंट, देन यू एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट. देयरफॉर अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन टेस्ट, देयरफॉर by comparison test, by the comparison test, summation of un is also convergent. That is, और ऐसे लिख सकते हैं यू एम प्लस यू एम प्लस वन प्लस डॉट 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 इज कन्वर्जेंट, और समेशन ऑफ यू एन इज कन्वर्जेंट, राइट. नेक्स्ट हम लोग प्रूव करेंगे कि एल ग्रेटर देन वन के लिए क्या है. नंबर 2, व्हेन एल ग्रेटर देन वन, लेट एल ग्रेटर देन वन. Since L greater than 1, we can choose same type का है, we can choose epsilon greater than 0 such that L minus epsilon greater than 1, right. तो हम लोग एप्सिलॉन ऐसे चूज कर रहे हैं कि एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन वन है. लेट एल माइनस एप्सिलॉन इक्वल टू आर सच दैट आर ग्रेटर देन वन, सच दैट आर ग्रेटर देन वन, सच दैट आर ग्रेटर देन वन. सिंस limit n tends to infinity nth root of un equal to L, therefore there exists a positive integer, there exists a positive integer m such that mod of nth root of un minus L less than epsilon for all values of n greater than equal to, almost similar, ठीक है. उसमें सिर्फ अपर बाउंड चूज किए थे, इसमें लोअर बाउंड में हम लोग एल, उसमें एल माइनस एल प्लस एप्सिलॉन को हम लोग स्मॉल आर से डिनोट किए थे, इसमें एल माइनस एप्सिलॉन को. सेम टेक्निक है और कुछ नहीं, थोड़ा बहुत चेंज है. तो इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे तो क्या बनेगा, एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एन एथ रूट ऑफ यू एन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, राइट. तो एन एथ रूट हटा देंगे तो बचेगा एल माइनस एप्सिलॉन होल टू दी पावर एन लेस देन यू एन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन होल टू दी पावर एन. बाई टेकिंग द फर्स्ट इनइक्वालिटी, उसमें सेकेंड इनइक्वालिटी हम लोग कंसिडर किए थे, इसमें फर्स्ट इनइक्वालिटी. बाई
taking the first inequality, by taking the first inequality, we find that un ग्रेटर देन, ये जो फर्स्ट इनइक्वालिटी इसमें क्या है, यू एन ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन के जगह पे आर से रिप्लेस कर देंगे आर टू द पावर एन, वेयर आर इक्वल टू एल माइनस एप्सिलॉन that is greater than 1, that is L minus epsilon that is greater than 1. Thus un does not tend to 0, un tend to 0 नहीं होगा, right? Hence summation of un is not convergent, or it may be say, we can say that it is divergent, right? और जब l इक्वल टू 1 है तो टेस्ट फेल, तो उसका प्रूव करने का कोई ज़रूरत नहीं है, राइट? तो इसका एग्जाम्पल हम लोग कुछ देख लेते हैं. अच्छा, कब हम लोग यूज़ करेंगे, जब पावर सीरीज रहेगा. पावर सीरीज में हम लोग ये फॉर्मूला कॉचीज रूट टेस्ट जो है पावर सीरीज में, जहाँ पे पावर है, वेदर इट मे बी स्क्वायर, क्यूब और क्यूब रूट, ऐसे कोई भी पावर फॉर्म में रहेगा उसमें ही. इसका एग्जाम्पल 1, सपोज समेशन ऑफ यू एन इक्वल टू समेशन ऑफ 1 माइनस 1 बाई एन होल टू द पावर एन स्क्वायर. तो इसमें पावर फॉर्म में है, तो वेयर यू एन का वैल्यू क्या है, यू एन मतलब 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर. तो लिमिट n tends to infinity nth root of un, that is limit n tends to infinity nth root मतलब इसे डिवाइड बाई n हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 बाई एन होल टू द पावर n हो जाएगा, राइट? होल टू द पावर n. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 बाई एन होल टू दी पावर माइनस एन, और ये माइनस 1 एडजस्ट कर दिए क्योंकि फॉर्मूला के हिसाब से 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर एक्स, ठीक है, 1 प्लस 1 बाई एक्स होल टू दी पावर एक्स. इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है ई, तो ई टू दी पावर माइनस 1 हो जाएगा, दैट इज ई टू दी पावर माइनस 1, दैट इज 1 बाई ई. नाउ ई का वैल्यू क्या है, ई का वैल्यू 2 से 3 के बीच में है, राइट? दैट मीन्स 1 बाई 3 लेस देन 1 बाई ई लेस देन 1 बाई 2, इट इज लेस देन 1 डेफिनेटली. तो कॉचीज रूट टेस्ट के हिसाब से लिमिटिंग वैल्यू लेस देन 1 है, दैट मीन्स कॉन्वर्जेंट. दिस इम्प्लाइज समेशन ऑफ यू एन इज कॉन्वर्जेंट, राइट? तो हम लोग इसको कॉन्वर्जेंट हम लोग लिख सकते हैं. और एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 2. सपोज समेशन ऑफ यू एन है इक्वल टू समेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर. तो लिमिट n tends to infinity nth root of un, that is limit n tends to infinity क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाई एन होल टू द पावर n, that is 1 by e. It is also less than 1, already we have proved. Then summation of un is convergent, then this implies summation of un is convergent. इसमें एक चीज है कि nth टर्म
क्लियरली मेंशन है, मगर जो मैथ में nth टर्म मेंशन है उसमें यू हैव टू फाइंड आउट द nth टर्म. सपोज थर्ड एग्जांपल जो है that is √2 divided by 2 plus √2 plus √3 divided by 3 plus √3 plus √4 divided by 4 plus √4 plus dot 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 plus √n divided by n plus √n plus dot 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 up to infinity. इनफाइनाइट सीरीज है प्लस डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट. तो कैसे प्रूव करेंगे? हियर यू एन, पहले यू एन nth टर्म को हम लोग डिटरमाइन करना पड़ेगा. nth टर्म दिया हुआ है n√n डिवाइडेड बाई n प्लस √n, राइट. तो इसमें कॉचीज रूट टेस्ट नहीं होगा, इसमें हम लोग कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे. अच्छा, कंपैरिजन टेस्ट के लिए थोड़ा कंपैरिजन टेस्ट भी डिस्कस कर चुके हैं, तो कंपैरिजन टेस्ट हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे. तो कंपैरिजन टेस्ट के लिए एक वी एन एज्यूम करना पड़ता है, तो हम लोग एक वी एन एज्यूम करेंगे. लेट वी एन कैसे एज्यूम करेंगे थोड़ा देख लेते हैं. वी एन एज्यूम करने के लिए सबसे आसान सा तरीका है, ऊपर सिर्फ एन का टर्म, एन का पावर कंसीडर करेंगे. ऊपर में एन का पावर कितना है? हाफ. नीचे हाईएस्ट पावर कंसीडर करना है. ऊपर हाईएस्ट पावर हाफ है, नीचे पावर 1, तो -1 दैट इज n टू द पावर माइनस हाफ दैट इज 1/√n, राइट. समझ में आ गया? ऊपर में n का हाईएस्ट पावर क्या है? हाफ, हाफ लिए, और नीचे n का हाईएस्ट पावर है 1, तो -1 हो जाएगा क्योंकि नीचे है, तो ऊपर लेके आएंगे तो -1 सिंप्लीफाई करके दैट इज 1/√n. नेक्स्ट क्या काम करना है? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/vn करेंगे, राइट. लिमिट n टेंस टू un/vn दैट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un मतलब क्या है? √n डिवाइडेड बाई n प्लस √n और डिवाइडेड बाई 1/√n that is limit n tends to infinity √n divided by n plus √n और ये ऊपर चला जाएगा that is √n, that is n by limit n tends to infinity n divided by n plus √n. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? लिमिट n टेंस टू n से डिवाइड कर देंगे तो 1 प्लस 1/√n. तो n टेंस टू इन्फिनिटी मतलब 1/√n, ये 0 हो जाएगा, दैट इज इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 होगा, फाइनाइट वैल्यू. इसका मतलब un और vn सेम कैरेक्टर प्ले करेगा. नाउ सिंस समेशन ऑफ vn हियर, समेशन ऑफ vn दैट इज समेशन ऑफ 1/n टू द पावर हाफ, इट इज डाइवर्जेंट. इज डाइवर्जेंट क्यों? क्योंकि पी टेस्ट जो हम लोग किए थे, समेशन ऑफ n टू द पावर p 1/n टू द पावर p, ठीक है. p जब पॉजिटिव है देन कॉन्वर्जेंट, p जब लेस देन है देन डाइवर्जेंट. ये हम लोग पहले ही देखे थे इसको. तो p लेस देन इक्वल टू p लेस देन 1 है, लेस देन 1 देन इट इज डाइवर्जेंट. दिस इम्प्लाइज समेशन ऑफ un इज ऑल्सो डाइवर्जेंट, राइट. तो ये इसके हिसाब से समेशन ऑफ un भी डाइवर्जेंट है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कुछ रूट टेस्ट और कंपैरिजन टेस्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे और उसके बाद डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.